Is my voice audible to you all? Yes, ma'am. Okay. So today we will start with the shortest path algorithms. That is, we will in this topic we will be discussing three different algorithms which will calculate the shortest path between the vertices in my given graph. Now, shortest path algorithm includes three types of algorithms. One is the follows the logic of minimum spanning tree concept. Fine. Under this minimum spanning tree, two type of algorithms are there. One is the Prim's algorithm and another is the Kruskal's algorithm. Fine. Another method of finding the shortest path is Distress algorithm. Another method is modified Warshall or Floyd-Warshall algorithm. So earlier we have studied what are the graph traversal mechanisms, BFS and DFS. Now we will study the shortest path algorithm, that is given any graph to you, which is the shortest path between all the vertices in my graph. Three types of algorithm concepts are there. First is uses the concept of MST, then Distress algorithm, then Floyd-Warshall algorithm. Fine. Now, these first two, minimum spanning tree and Distress algorithm, they use adjacency list concept. And this one, Floyd-Warshall algorithm, they use adjacency matrix concept. I hope you have remembered. Actually, in my copy, you can represent your graph like this by drawing pictures, right? Suppose this is a graph. By drawing pictures, you are representing. But when it comes to computer, how will you represent it? You represent it with the help of adjacency matrix. 4 plus 4 matrix will be there. So A, B, C, D, this concept is there. So how will the matrix look? First, all the diagonals will be filled with 0. A to B, there is a edge. A to C, there is a edge. Rest is this. From B to A and B to D, there is a edge. From C to A, there is a edge. From D to B, there is a edge. So like this, when I will input to my computer as a program, I will be inputting this matrix. I cannot draw these things, right? So whenever I will be inputting my 4 by 4 matrix like this, it means that by default, this matrix will represent this graph. Fine. So this two concepts uses the concept of storing it as adjacency lists, and this concept uses the concept of storing it as adjacency matrix. Fine. Now, first we will study the minimum spanning tree concept, MS tree. So, what is a spanning tree? A spanning tree of any connected, undirected graph. It is basically a subgraph that will connect all the vertices together. And you all know, suppose I have a tree like this. So, spanning trees are those which will connect all my vertices. This can be one spanning tree. Another spanning tree can be
This can be another spanning tree. Another variant can be there. So a lot of varieties of different spanning trees can be there. Among these varieties of spanning trees, the one with the minimum weight, suppose weight is assigned to it. Suppose 2, 4, 7, 1 and 3. Suppose this will have this weight. So 2 plus 1, 3, 3 plus 6, 6 plus 7, 13. This will have 3 plus 1, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 7, 15, right? So obviously, when I will talk about the minimum spanning tree, I will choose this weight, this solution I will choose. So any graph can have different spanning trees, and when we assign weights to each of the edges, we use these weights to calculate the sum of the weights of the edges in that spanning tree. And the one solution among the different spanning trees with the minimum weight summation will be considered as the minimum spanning tree solution for that particular graph. So this is the way how we select the minimum spanning tree. This concept is used in both of the algorithms, that is Prim's algorithms and Kruskal's algorithm. Okay. So a minimum spanning tree is defined as what? As a spanning tree with weight less than the other spanning trees. Either it will be less or equal. If two spanning trees have the same weight, you can choose any one as your solution. And if any of the spanning trees among your solutions have lesser weight, we will have to choose that spanning tree as the minimum spanning tree. Fine. So to put it in words, MST is what? It is a spanning tree that has some weights associated with its edges, and the total weight of the tree, that is the sum of the weights of its edges, will be at a minimum. That is known as my MST. Now, the same applications graphs have, the same applications minimum spanning trees will also have when it will be used for designing several networks for simulation. When there are electrical electronic students, they do a lot of simulation based algorithms, they do a lot of simulation based programs also. So for designing the networks, you will always have to consider those paths which will give you the minimum cost or which will give you the minimum headache, right? So these are always used in designing networks. For suppose for finding airline routes, suppose in order to reach from Kolkata to Hyderabad, 5 type of routes are there, but choosing on which route your cost will be minimum and your time will be effective, this comparison or this concept, it has to be deciphered from this minimum MST's concept. So suppose how do we connect the different terminals, that is the cities, the computers, these all concepts we use, or we use the concept of the spanning trees or the minimum spanning trees, and we design these things. So that these are the real life applications of this MST. Now talking about the Prim's algorithm, the first variety of MST. Now, Prim's algorithm is an algorithm that is used to form a MST for a, it will form a MST for a connected weighted undirected graph. Fine. Prim's algorithm only works for undirected graph, whereas Kruskal's algorithm works for any type of graph. So Prim's algorithm will work when the graph is a connected one, when the graph has weights associated to it, and when the graph is an undirected graph. Okay.
So how does this algorithm works? That we will discuss now. First, three words are there. One is the tree vertices concept. Another you will hear when I will write the algorithm, fringe vertices concept. Another is the unseen vertices concept. These three concepts are there. Now, tree vertices are those vertices that are part of the tree or part of the spanning tree, minimum spanning tree. So one by one, when I will be finally selecting a vertex to put inside my MST construction, that vertex I will consider to be my tree vertex. Okay? What are fringe vertex? Fringe vertex are vertices that are adjacent to the tree vertices, but they are currently not part of the MST. That means, suppose I have a vertex A, from here B, from here C. I am starting my MST. First, I have included A in my list. Fine. So, this A is a tree vertex. It is a part of my MST. Among this A, suppose this has a weight 4, this has a weight 3. So, the vertices that are adjacent to my tree vertex, so B and C in this stage are fringe vertices. They are not part of my MST yet. I have a decision to make. That is which one I will include in my MST construction. So I see that these two vertices are connected to this vertex. So among these two fringe vertices, C has got the minimum weight. So I will not consider this path for this construction. I will consider C to be my next tree vertex. Again, from C, I am seeing two vertex are there. Suppose here is D, here is E. Again, these two are fringe vertices. Among the two fringe vertices, I will make a decision which one to include in my tree vertex. So this is the concept of tree vertex. The vertex which are included in my final MST construction is my tree vertices, and the vertex which are not included and which helps in forming the decision which one to connect is the fringe vertices. Now remember, in course of time, the fringe vertices only gets converted to the tree vertices. Because at one point of time, B and C was your fringe vertex, but after a point of time, you concluded that C must be included in your tree vertex. So among the fringe vertices, one vertex at a time becomes the tree vertices. Okay. And now what are unseen vertices? The vertices that are neither tree vertices nor fringe vertices, this falls under the category of unseen vertices. Clear? So this is the small words which we will be using in solving or in forming the algorithm. And now we will discuss the algorithm first. Okay. Now, let us first take one example. What should we do first? Okay, first I will just. हेलो मैम हाँ बोलो. मैम ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कौन सा वाला? मैम ये ट्री वर्टिसेस और फ्रिंज वर्टिसेस दैट वन जो वर्टिसेस एक एक करके फाइनल एमएसटी कंस्ट्रक्शन में सिलेक्ट हो जाएंगे उसको हम ट्री वर्टिसेस बोलेंगे. और जो वर्टिसेस हम सपोज हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से हम देख रहे हैं मेरा दो वर्टेक्स है सी एंड बी. ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ए तो मेरा ट्री वर्टेक्स है. B and C are connected to A. So at first step, B and C are my fringe vertices. They are not part of my MST. For the next step, I saw that C has a minimum weight. So again, then C is included in my tree vertex. Then C becomes my tree vertex. So like this is the concept of fringe vertices and tree vertices.
Okay. Suppose this is the graph which is given to you, and you need to understand the algorithm to solve this. First, your step one will be what? To choose a starting vertex. Your step one is to choose a starting vertex. So A is my starting vertex. Clear? What is your step two? Your step two will be add the fringe vertices. That means the vertices that are adjacent to A. Now, these edges that are connecting this A, that is the fringe vertices, I will just show it with a dotted line to make you understand. So you tell me what are the vertices that are fringe vertices for A? For A, what are the... C. Huh? C. B and C. Yes. Fringe vertices are first B and then it is C. Both of them are fringe vertices, right? Step 3 will be among the fringe vertices that you have got for a particular vertex, you will select an edge connecting the tree vertex and that fringe vertex that has a minimum weight. And I will add the selected edge and the vertex to the minimum spanning tree. You tell me which fringe vertex had a minimum weight. C. C. So your step 3 will be A, C, right? Let your B be a dotted one. Fine. So first I have got A, then I have got C. Clear? Now, the one with the solid line becomes your tree vertex. Now you tell me which are the vertices which I will include now. What is my tree vertex from step 3? मेरा ट्री वर्टेक्स कौन सा है स्टेप 3 में? C. सी. सो अभी हम लोग क्या देखेंगे? सी से कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट हुआ है? सी से कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट हुआ है? B and D. बी एंड डी. पर हम लोग बी को कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, सॉरी, वो तो क्रुशकल्स का लॉजिक है ना, सॉरी. अच्छा, बी एंड सी. तो बी के लिए ये मेरा वेट है 4 और डी के लिए मेरा वेट है 10, राइट? अभी प्रीम का लॉजिक यही है कि whenever 3 fringe vertices will be there, always choose the minimum one. So the minimum one among 7, 3 is 3. The minimum one among 7, 4 and 10 is 4. 4. क्लियर? अभी कोई हमें बोल सकते हैं कि हम A to B dashed line और रखे ही क्यों नहीं? I selected 4, but I am always keeping the dashed line, right? तो A to B dashed line हम क्यों नहीं रखे? Because ma'am, B is no longer fringed. ना. यही लॉजिक है. Always we need to avoid cycles in any graph. The graph should be a acyclic one. Once your this edge is selected and any
ऑफ द इंस्टेंस में अगर 7 मेरा मिनिमम भी होता है, अगर ये मेरा सिलेक्ट हो जाता है, तो ए बी सी के भीतर एक साइकिल बन जाएगा ना। तो हम लोगों को हमेशा साइकिल्स अवॉइड करना है। अगर इस स्टेप में मेरा ए बी सिलेक्ट होता, सपोज इस स्टेप में मेरा ये वाला चीज सिलेक्ट हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये दो लाइन को कभी रखेंगे ही नहीं। साइकिल में भी से देखो, हम लोग मिनिमम जो एज है उसको कंसीडर किए हैं, हम साइकिल हमेशा अवॉइड करेंगे। अगर मिनिमम एज जब मिल गया, फिर नेक्स्ट वाले एज को कभी कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम बस इसको ही लेके चलिए, तो कोई साइकिल नहीं लग कर रहा है ना, इसलिए सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड नेक्स्ट, जस्ट वेट। अच्छा, अब तुम बोलो मेरा ट्री वर्टेक्स कौन सा बना लास्ट? मेरा लास्ट ट्री वर्टेक्स कौन सा बना? लास्ट स्टेप में मेरा ट्री वर्टेक्स में कौन सा बना? कौन सा नया वर्टेक्स जुड़ा है? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? हेलो, कैन यू ऑल लिसन टू मी? Yes, ma'am. अच्छा, तो लास्ट Ma'am, can you please repeat? लास्ट स्टेप में मेरा कौन सा वर्टेक्स इंक्लूड हुआ है? कौन सा वर्टेक्स मेरा अभी ट्री वर्टेक्स है? पहले ए इंक्लूड हुआ बी। या राइट, लास्ट स्टेप में मेरा बी B. इंक्लूड हुआ। अभी बी से एडजेसेंट वर्टेक्स को कंसीडर करेंगे। बी से एडजेसेंट वर्टेक्स फर्स्ट है मेरा ए, पर उसको हम लाएंगे ही नहीं और पिक्चर में, क्योंकि कभी भी मेरा अगर ए टू बी सिलेक्ट हो जाता है, already I have got A to C, B to C as minimum weights. If at any stage A to B got selected, then it will form a cycle. I cannot do with any cycle in my graph. So apart from A, what are the other two edges? One is B to D and another is B to E. These are the other two edges. Right? Now you tell me, among these three fringe edges, 10, 9, 11, among these three fringe vertices, which one has the minimum weight? 9. 9. 9. So I will include D. D will become my tree vertex. ठीक है? D becomes my tree vertex. अब तुम बोलो, मेरा एक यहाँ पे है BCD, it's a closed loop. इसमें मेरा BC एक बार आ गया है, मेरा BD भी मिनिमम चूज होके आ गया है। हम CD क्या कभी जानने की कोशिश भी करेंगे CD मेरा मिनिमम है कि नहीं? नो, क्योंकि CD अगर कभी मेरा और मिनिमम होगा भी, मेरा तो साइकिल बन जाएगा, तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे CD को, ठीक है ना। और बाद बाकी मेरा E जो था हम वैसे लिख दिए। फाइन। नाउ फॉर स्टेप 8, फॉर स्टेप 8 मेरा लास्ट बना है D, ट्री वर्टेक्स। D से मेरा कहां जा रहा है? D से मेरा B जा रहा है, जो अभी भी इंक्लूडेड है। D से मेरा एक C जा सकता है, but that I can never include because it will form a cycle between B, C and D. Closed cycle, closed loop बोलते हैं। तो अभी मेरा लास्ट वर्टेक्स को इंक्लूड कराने के लिए मेरा को कौन सा वर्टेक्स और कौन सा एज को कराना ही कराना पड़ेगा? दैट मीन्स जो भी वेट हो यही मेरा लास्ट है, और कुछ एजेस है ही नहीं। तो स्टेप 8 में this is my result of step 8. So at the end, you have this as your MST from this entire graph, and the weight of your MST will be this. 3 plus 4, 7, 18, 18 plus 9, 27.
27 is the weight of your MST using Prim's algorithm. Now, if you have understood this, I will now give you one example to solve. Please solve it, start solving it, so that if you have a problem, it can be solved right now. It is not like काम करवाने के लिए दे रहे हैं. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखे हो तो जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए हम लोग साम्स करते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए. Okay, in the meantime, I am drawing. Everyone, please give your attendance. Write your attendance in the attendance section. In the chat box, write your attendance. 6, 4, 8, 6, 7, 4, 14, 5, 7, 8, 10. This is the graph given to you. Apply Prim's algorithm of finding the MST for this particular graph and tell me what will be the minimum weight of this particular graph. Okay? Quickly do it. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम ये नेगेटिव वेटेड एजेस भी हो सकता है. नेगेटिव वेट. नेगेटिव वेट कैसे होगा? एक एज को थोड़ा बताओ. मैम हो सकता है कि नहीं हो सकता वो पूछ रहे हैं. मतलब जैसे -6 या -4 समथिंग लाइक दैट. ये हो सकता है अगर आप लोग कोई मतलब हम लोग तो ग्राफ यूज करते किसी कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए. यही सेम कॉन्सेप्ट बहुत सारा फील्ड्स में अप्लाई होता है. अगर ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप किसी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में अप्लाई कर रहे हो, माने सिटीज के भीतर एयरलाइंस और उसके भीतर रोड मैप में डिस्टेंस, तब नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है. पर अगर ये ग्राफ को आप किसी और फील्ड में अप्लाई कर रहे हो जहां पे कुछ वोल्टेज का बात है या कुछ का बात है, तब नेगेटिव वोल्टेज हो सकता है शायद. ये डिपेंड करेगा ग्राफ का लॉजिक आप कौन सा फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, उस फील्ड में आप कौन सा सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो. सपोज आई एम शोइंग यूजिंग द ग्राफ कॉन्सेप्ट टू मार्क द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, then it can never have negative weights. But अगर ये हम इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन में कुछ वो लोग कर ले हैं जहां पे वो लोग नेगेटिव वोल्टेज या कुछ दिखा सकते हैं या कुछ मार्क कर सकते हैं, तब शायद नेगेटिव हो सकता है. वो डिपेंड कर रहा है कि एजेस जो है विच विल कनेक्ट द वर्टिसेस, वो एजेस कौन सा एलिमेंट को डिनोट करेगा. वो एलिमेंट क्या कभी नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? If it is a yes, it may take. If it is a no, it cannot take. ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वे में अप्लाई करते हैं. ग्राफ तो सभी लोग सीखते हैं हम लोग, वो अपने फील्ड में कैसे अप्लाई करेंगे या फिर कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा सिमुलेशन में अप्लाई करेंगे, वो तो डिपार्टमेंट या ब्रांच के ऊपर होता है. Ma'am, the answer is 32. The answer is 32. Wait. 6 plus 4, 10, 10 plus 10, 20, 20. No. What is the graph which you have got? I mean, Ma'am, A to D. huh? A to D. fine. मैम 35. फिर Ma'am, D to F. D to F, fine. Then Ma'am, then F to E. नहीं, F to E include नहीं होगा. Anyone? Ma'am, why ma'am? स्टेप में कुछ गड़बड़ की हो, वो हमें फिर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा.
फिर देखते Okay, हैं ma'am. अभी स्टेप बाय स्टेप। कोई और किसी का कुछ और आंसर आया है? मैम F to G। नहीं नहीं नहीं। But ma'am, F2E is a minimum weight. मिनिमम वेट क्या वो साइकिल का हिसाब करे हो? अच्छा, देखते हैं फिर ये करके। अच्छा, पहले तो ए स्टार्टिंग किए हो। ए जब स्टार्टिंग किए हो, मेरा बी पे कनेक्ट होगा, मेरा डी पे कनेक्ट होगा, है ना? इस दोनों में से मेरा लोएस्ट होगा ए टू डी, तो हम ए टू डी को लेंगे। तो मेरा डी से कनेक्टेड ऑलरेडी है। मेरा डी से क्या क्या कनेक्ट हो सकता है? ये वाला कनेक्ट हो सकता है, ये वाला कनेक्ट हो सकता है, ये वाला कनेक्ट हो सकता है, मतलब एफ ई एंड बी। So between 6, 8, 14 and 5, this one is minimum. So fine, you have chosen A, D and F. Fine. अभी भी तुम्हारा ये सब कनेक्टेड है। These all are connected still, right? Between F, which is six, 8, 14, 7, 10. Which one is minimum? मैम 6। 6. So here is where the problem has been done. है ना? ठीक है। अभी जब ये दो हम कर लिए हैं, हम D2B कभी और कंसीडर करेंगे? नो मैम। नो। तो मेरा ये जैसा है वैसा रहेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा, पर मेरा ये अभी कभी कंसीडरेशन में आएगा ही नहीं। अभी मेरा बी बन जाएगा तो ये मेरा चूज करने के लिए लायक होगा। बी से डी कंसीडरेशन में कभी आएगा ही नहीं। बी से ई हम लोग चूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ठीक है। अभी 7, 6, 14, 7 एंड 10 कौन सा वाला मिनिमम है? 6। 6। तो अभी क्या होगा मेरा? अभी मेरा ए हुआ था, बी हुआ है, फिर मेरा ई आएगा। अभी यहाँ पे जैसा था डी और एफ तो रहेगा ही, है ना? सो ऐसे बनेगा। आई थिंक नाउ द 50% I have already done. I mean A, B, E, D, F. Out of the 7 vertices, 5 vertices only I have shown you. So this is the way the concept will be applied. Definitely there must be a कुछ मतलब कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो कॉन्सेप्ट के, इसलिए कुछ गलत आया है। ठीक है। सो द आंसर, हाँ बोलो। मैम हम लोग को लगा जिस वर्टेक्स पे है हम लोग उससे हम लोग को लेना है। अच्छा ठीक है, उस वर्टेक्स से लेना है, सर्कल के पर साथ हमेशा सारा वर्टेक्स का भी मतलब करना है, समझे ना? तो अभी तुम लोग करके देखो तो क्या वेट आ रहा है। नाउ यू डू एंड टेल मी व्हाट इज द वेट कमिंग।
मैम 36। इससे कहाँ पे इतना गड़बड़ कर दिए, इतना तो कर ही दिए हैं, फिर से गड़बड़ किए। सॉरी मैम 33। हाँ राइट, क्या बना है बोलो तो, ABDF, उसके बाद मैम B to E and E to C and F to G. F to G. No ma'am, sorry, E to G. Right. So this is the perfect answer. This is the answer for your MST using the Prim's algorithm applied on this particular graph. Right? And the summation will be 33. This will be the weight of your total MST. So if you are getting this answer, it's perfectly fine. You have understood. If you are not getting the answer, please consult with either with me or with your friend only who has been able to solve. So क्या होता है ना, दोस्त को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. So consult with your friends who are able to get this answer. So this was all for today's class. In the next class, we will be meeting with Kruskal algorithm. Okay. Thank you so much.